Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this video we are going to discuss angular motion provincial MCQs from all boards of Pakistan. इससे पहले हम तकरीबन 12 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, सो मस्ट चेक आउट दीज एज वेल। और वो आपको कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा प्रोविंशियल एमसीक्यूज़ के हवाले से, नाम उसका लिखा होगा, वो आपने ओपन करना है। सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगी। अगर आप इन बुक्स का यानी ये जो है एमसीक्यूज़ का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंत तक वॉच करना होगा, और लास्ट में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि हाउ कैन यू एक्सेस दिस पीडीएफ एज वेल। तो आपने ज़रूर वीडियो के अंत तक वॉच करना, फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी भी काफ़ी सारी हेल्प हो सके। अब ये जो एमसीक्यूज़ है, हमारी एक टीम है जो कि डिफरेंट बोर्ड से बनाती है, ठीक है, और हमारी फेसबुक ग्रुप है, उसमें हम इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करते हैं, फिर बाद में एक पीडीएफ बना के आप लोगों से शेयर कर देते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड मस्ट वॉच दिस वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एमसीक्यूज़ एंड वी हैव अ पीडीएफ हियर. Main credit goes to you can say admin Fatima Queen, who have compiled all these, who has compiled all these data. All this means you can say जितने भी MCQs हैं सारे इन्होंने कंपाइल किए हैं। तो इसके अलावा जो मेन, फिर उसके बाद क्रेडिट जाता है देन जो टीम मेंबर्स को जिन्होंने ये MCQs जो है वो बनाए हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टीम सिंथ के देखते हैं एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म, अभी चैप्टर है दैट इज एंगुलर मोशन, ठीक है। तो इसके हवाले से हम द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट इज यू कैन से is both B and C. So what is B? Varies inversely with the radius of orbit, and C that is varies directly with the square of velocity. Means you can say V square over R. If a body is rotating in a circle with a variable linear speed, it you can say both centripetal and tangent acceleration. The rate at which a body rotates about an axis expressed velocity. So that is expressed, that is none of these. The rate of change of angular displacement is angular. So what is there? So that is angular velocity. Angular velocity of an R and watch. So that is 21,600 पाई ओवर 21,600। इसको आपने कैसे करना है कि आपने मल्टीप्लाई कर दें 24 को और 60 से, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो आ जाएगा, यानी पाई ओवर ही आ जाएगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, सो दैट इज पाई बाई 6 रेडियंस। What is the angular displacement of a second and hand watch after 5 minutes? So that is all of these. That is 10 pi radian, 5 revolution, 180 degrees. In a flywheel makes 120 revolution per minute, then its angular speed will be, so that is 4 pi radian per second. इसके लिए आपने 120 revolution को जो है वो 60 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास बल्कि मल्टीप्लाई करना है 120 को मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से और डिवाइड करना है 60 से, ठीक है। In an orbital motion, the direction of angular vector momentum vector is, so that is perpendicular to the orbital velocity. If a person standing on a rotating disk stretches out its hand, so that is you can say जो B है वो increase हो जाएगा, the angular speed will be decrease. Okay. Now team federal MCQs. SI unit of angular displacement, so that is radian. The angle through which the disk rotates is called as angular displacement. Equation for angular momentum is D, both B and C. Means B is equal to S is equal to R into cross B, P, and C is L is equal to I omega. In carnival ride, the passenger travel in a circle of radius 5 meter, making one complete circle in the 4 second. What is the acceleration? So that is B, 12.3 meter per second. Now team Balochistan MCQs. Orbital velocity of Earth satellite near surface is 7 km per second. If the radius of the orbit is 4 times then the of Earth radius, its orbital velocity in that orbit will be, so that is 3.5 km per second. Frequency of artificial gravity is, so that is 2 pi under G over R. Which of the following has 50% translation, 50% rotational kinetic energy? So that is ring. Ratio of translational and motional kinetic rotational kinetic energies of a solid sphere, so that is C, 5 by 2. Or relate the translation motion with a rotational motion. Okay, so here 1 over 2 mv square and 1 over 2 you can say I omega square, as I for the sphere is 2 over 5, so putting the values we'll get 5 over 2. Banking angle doesn't depend upon, so that is answer A, mass. The direction of angular velocity is always okay, talking about angular not linear, is along you can say the axis of rotation. Team KPK MCQs. The period of circulatory motion is given by T is equal to 2 pi R over V. 1 radian is equal to how many degrees? So 57.3 degree. Critical speed of an artificial satellite is, so that is 7.9 km per second. A hoop and a disc
have same mass and radius. Their rotational kinetic energy are related by n. So that is kinetic energy is equal to 2 kinetic energy of the disk. The current rotational kinetic energy of hoop is used equal to, so that is its translational kinetic energy. When a body moves in circle, the angle between its linear velocity and angular velocity is always, so that is 90%. So that's all for today. And if you want to join our group, that is Nmdcat preparation 2022, here you will find the PDF as well, and answer of these MCQs with solution. Okay, if you want to join our WhatsApp group, then check out our playlist. Here we have provided the WhatsApp group link. Click on the link and then join our group. So that's all for today. Thank you so much for watching the video. Till the next video, take care. Allah Hafiz.